Okay, so guys, am I live or am I live? I am live. Hello guys, welcome everybody. How's life treating you? Sir, life is treating us nice and good and nice. Let's start today's session. Hello Saurav, hello Sia. चलो देखो, today's agenda is to solve the entire questions for CAT Quant slot 1 2024. Okay, there were 22 questions asked, सारे करेंगे, and you know the limitations. Since we have to solve entire questions, आज I won't be giving you any time to attempt it beforehand, right? You guys know the limitation, and I have told you कि आप करके आना, पहले से ट्राई करके आना. चलो, so one by one we will solve all 22 questions. If you have completed most part of your syllabus, hopefully you will understand the solutions. Mostly you will understand the solutions. Ask me if you come across any doubt. Let's start with the first question of the day. CAT QA 2024 slot 1. We will try to keep it short and crisp. Chalo. Do not forget to join me daily at 7 p.m. guys. ये तो important है, daily at 7 p.m. wherein we do topic wise preparation, revision, live mock analysis, doubt session and what is last, strategy discussion. हम लोग करते रहते हैं daily at 7 p.m. Today is a special day, Sunday है, so we are doing this. Let's start with the first question of the day. आ गया question? Noops. Okay, sir. सर अपलोड तो करो. Just a second boys, just a second. चलो, हाँ अच्छा, scan this QR code if you want to be part of my official Telegram channel. I constantly post link of free sessions, free notes, free resources over the channel. Today too. क्या बेटा? Oh no. So this is the first question for CAT 2024 slot 1. Consider two sets. Set A has these elements 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set B has 3 elements 1, 8, 27. Let F be a function from A to B such that for every element in B there is at least one image in A. So guys, what they are saying कि दो set है, let's say set A. Set A में you have 2, 3, 5, 7, 11 and 13. This is set A. And there is this another set B. Set B which has elements 1, 8 and 27. Okay. Now for every element in B there is at least one element in A. For any element in B there is at least one element in A. What does this mean? कि B के हर एक एलिमेंट के लिए there is an element in A, which means कि ऐसा केस पॉसिबल नहीं है. We are aware of the fact that any element in A can be mapped only with one element in B, right? So ऐसा केस पॉसिबल नहीं है. In this case, what is the problem? 8 and 27 are not mapped with any element in A. So all the element in B must have at least one image in A. Bolo yes sir. So that's the case. This is not allowed. What is allowed? Sir, this. उसके बाद कुछ भी होगा, it works. And everything else works, right? All the elements in B should have at least one image in A. आपको problem statement समझा? अब इसको करेंगे कैसे? This looks like to be a problem of functions, but more this is the problem of permutations and combinations. It appears to be a question of functions, but technically it is a question of permutation and combinations.
सबसे पहले we will try to find out all the relationships possible. टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल है? सो टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल है? सर 2 के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस, 3 के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस, 5 के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस, 7 के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस, 11 के लिए you have 3 options, 13 के लिए you have 3 options. So all of these 6 elements have 3 options each. So total possibility is 3 raised to the power 6, which is 3 raised to the power 6 is 729. So total different functions possible from A to B is 729. Okay. इसके लिए 3 possible है cases, इसके लिए 3. So 3 into 3 into 3 into 3, how many times? 6 times. So total functions possible is 729. जिसमें one of the possibilities is this. One of the possibilities is this, which we have to ignore. One of the 729 possibilities looks like this. ये ignore करना है. ऐसे और भी बहुत सारे हैं which we have to eliminate from 729. Let's do that one by one. In these 729 possibilities, all 3 are also mapped. Any 2 are also mapped. Any 1 is also mapped. Right? तो सबसे पहले in how many ways only one of this is mapped. I mean all of these is mapped to only one of these 3. In how many ways it is possible? 3 ways. या तो सारे के सारे 1 को मैप हो जाए, या सारे के सारे 8 को मैप हो जाए, या सारे के सारे 27 को मैप हो जाए. This is undesirable. Okay. So anyone, we have 3 possibilities for that. Okay. All of these connected to any one of these, which is undesirable, right? So ये 3 minus होगा. अच्छा, any 2. All the elements in A are mapped to any 2 elements here. In how many cases this is possible? आ जाओ देखते हैं. तो सबसे पहले there are 3 combinations that we can make from here. 3C2. I'll select 2 first out of these 3. Okay. Now let's say 3C2 is 3. So there are 3 combinations possible. एक है 18, दूसरा है 127, and third is 827. Right. अगर हमने 18 को लिया, if only 18 is considered, केवल 18 अगर consider किया, so this has 2 options. Right? इसके लिए 2 options है 1 and 8. इसके लिए भी 2 option है 1 and 8. इसके लिए भी 2 option है 1 and 8. इसके लिए भी 2 option है 1 and 8. इसके लिए भी 2 option है 1 and 8. इसके लिए भी 2 option है 1 and 8. So total options are 2 raised to the power 6. But again we have to subtract 2. Why? Because ये भी हो सकता है ना कि all of them consider 1. सारे के सारे 1 को connect हो जाए, या सारे के सारे 8 को connect हो जाए, which has already been taken care of. हाँ या ना? 2 के लिए you have 2 possibilities, 1 and 8, right? 3 के लिए 2 possibilities. For all of them you have 1 and 8 as the possibilities to be connected. But इसमें ये भी count हो गया ना, again वापस count हो गया कि all of them are connected to 1, all of them are connected to 8. So वो 2 केस मुझे निकालने पड़ेंगे, right? चलो, I hope you understand this. You need some understanding of permutations and combinations. And this is for 1 and 8. Similarly 827 and 127. So I have to multiply this by 3. Now how much is this? 2 raised to the power 6. 2, 4, 8, 16, 30, 32, 64. 64 minus 2 is 62. 62 into 3 is 186. So this is not desirable. So what would be the final answer? 729 minus 3 minus 186. 729 minus 3 minus 186. 729 minus 189, and this is 540, option A. This is 540, option A. Bolo yes sir. Got it? Answer to the first question. So let's move to the next question. In the xy plane, the area in square units of the region defined by the inequalities y is greater than or equal to x plus 4 and
-4 is less than equal to x square plus y square plus 4x minus y less than equal to 0. गुड आफ्टरनून श्रद्धा. अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है क्वेश्चन का? व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, कहीं ना कहीं दो तीन ग्राफ है, ग्राफ के बीच का इमेज एरिया निकालना है. फर्स्ट इमेज इज दिस, फर्स्ट इंप्रेशन इज दिस 2 पाई ऑप्शन बी. वेरी गुड. सो कहीं ना कहीं कुछ ग्राफ बनेगा एंड आपको एरिया बिटवीन द ग्राफ निकालना है. सॉर्टेड. व्हाट दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन y greater than equal to, अच्छा y is equal to x plus 4, y is equal to x plus 4. it represents a line, yes or no? इसका x और y इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट y is equal to 0. so इसका x इंटरसेप्ट would be -4 0, y इंटरसेप्ट would be 0 4. yes or no? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x coordinates and y coordinates for the line. Very good. And what is this? This looks like to be an equation of circle. आ जाओ डिकोड करते हैं इसको. Let's do this. Let's do this. First of all, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो एक सर्कल मिलेगा, राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे दूसरा सर्कल मिलेगा. You'll get 2 circles. एक लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेट करोगे you'll get a circle, राइट हैंड साइड पे इक्वेट करोगे you'll get a circle. पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेट करते हैं. सो व्हाट डू आई हैव? I have x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू -4. सॉर्टेड, राइट? ओके, सो दिस इज x स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर. 4x can be written as 2 into x into 2. So I need a 2 square, right? Now this has been taken care of. This has been taken care of. Y square, and this is minus 4y. So minus 2 into y into 2 square. So 2. So I need a 2 square here as well. Okay, and this is guys, देखो हमने ऐड किया 4 plus 4 8. तो हमें 8 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. हेलो जय, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, राइट? सो दिस गिव्स मी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर. दिस 8 goes to the right hand side, 4 which is 2 square. So center of this circle is -2 plus 2, -2 plus 2, and radius is 2. बोलो yes sir. Radius is 2. रेगुलर सेशन में अटेंड किया करो जय पाटिल, और रेगुलर सेशन विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, so if we work towards the left hand side, we have a circle जिसका सेंटर इज -2 plus 2 एंड रेडियस इज 2, राइट? अगर हम इसको राइट हैंड साइड से वर्क करें, राइट हैंड साइड पे, सो क्या मिलेगा? अच्छा देखो, आई एम राइटिंग इट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. एक सर्कल मिला जिसका सेंटर है -2 plus 2 एंड रेडियस इज 2. ये है सेंटर. If we work towards right hand side, so what do I have? Right hand side के तरफ अगर देखा तो this is less than equal to 0. Less than equal to 0. So कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? I know that मुझे इधर 8 चाहिए, तो इधर भी 8 चाहिए. बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है. So I will land with x plus 2 whole square plus x minus plus y minus 2 whole square less than equal to 2 root 2 cube. So this equation represents a circle. Very good. This equation represents a circle with center -2 plus 2 and radius 2 root 2. Radius 2 root 2. And this line also passes through this center.
देखो, if you put x as -2 and y as 2, it satisfies. So this line also passes through this center, and now we can plot graph. And now we can plot the graph. Let's plot the graph now. How it will look like? Okay. So let this be the circle with center. इस सर्कल का सेंटर है 2 - 2, राइट, एंड रेडियस इज 2. आई एम प्लॉटिंग द फर्स्ट सर्कल. ये वाला सर्कल. द सेंटर इज -2 to -2 to, okay, -2 to, and the radius is 2, right, radius is 2. जो सेकेंड सर्कल है, इफ वी प्लॉट दिस, आपको कैसा दिखेगा बेटा? Second circle, if we plot, center is same, guys. The center is same. Center आपको same रखना है, okay. So the second circle looks like this. The center is same. Center same है. The only thing is the radius is bigger. Radius of second circle is bigger, okay. And what about this line? What about this line? इस लाइन का इंटरसेप्ट हम लोगों ने निकाला था ना. This is a straight line whose x axis, whose intercepts are x 0 put करो, y is 4. So 0 4, y 0 put करो, x is -4, -4 0. Okay. So this line is something like this and passes through center, guys. This line passes through center because -2 satisfies the line. So ये लाइन कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना, सेंटर से पास करता हुआ. दिस लाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस. This line would be something like this, right? Question 48 4 4 and -4. हाँ, this line would be something like this. Okay. Now ignore कि सर x coordinate इसके बीच में आ रहा है यार. Forget this. Because diagram is not accurate, but this line would be something like this. The line would be passing through center, and we have to find the area common. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये कॉमन वाला एरिया, राइट. हमें निकालना है ये कॉमन वाला एरिया. We have to find area, this common area, right. This equation lies between -4 to +0. So this entire ring, but line के ऊपर, we have to find the area of this ring, the half ring. वो कैसे निकलेगा? Have to find the area of the half ring. Okay. So area of the full ring is area of the bigger circle minus area of the smaller circle, which is pi into 2√2 cube minus pi into 2 cube. Pi r square है ना, sorry, pi r square. Right? So this is 8 pi minus 4 pi. 4 pi is the area of the entire ring, but I am interested in area of only half of the ring. We are interested in area only of half of the ring. So area of ring is half of, area of half ring is this 4 pi divided by 2 pi. Correct answer to this question was option B. Correct answer to this question was option B. हाँ, स्क्वायर है वो बेटा. बोलो यस सर. आगे बढ़े सर. वाई द एरिया ऑफ द अपर हाफ रिंग. अच्छा, वाई द एरिया ऑफ द अपर हाफ रिंग, ये जज करना है ना. तो देखो, y should be greater than x plus 4.
y शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 4। तो ये लाइन है x प्लस 4 का, ओके ये लाइन है x प्लस 4। अभी देखो अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे या x इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, सो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया समवेयर ओवर हियर लाइन के ऊपर, सो y शुड बी ग्रेटर देन दिस, मतलब अपर एरिया काउंट करना है, अपर एरिया, ओके डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर लेस देन इक्वल टू होता तो उस पॉइंट के नीचे आते, हम उस पॉइंट के नीचे, उस लाइन के नीचे आते। सॉर्टेड? y has to be greater than equal to x plus 4. To understand this, x को एक वैल्यू पुट करो and that comes to be 5 and y should be greater than that, everything above that line. Sorted? दोनों सर्कल के बीच का क्यों, ये तो समझ रहे हैं ना? Because it lies between -4 to 0. So उस रिंग की एरिया में हम इंटरेस्ट रखते हैं। Makes sense? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्लास में भी करा था। We have done this question couple of days back in our class. A fruit seller has a total of 187 fruits. Consists of apple, mangoes and oranges, right? Apple, mangoes and oranges. The number of apples and mangoes are in the ratio 5:2. So the number of apples and mangoes are in the ratio 5:2. So 5x and 2x. And there are total of 187 fruits. So oranges would be 187 minus 7x. Right? Acha, how many of them are sold? How many of them are sold? So number of fruits sold, apples is 75, mangoes is 26 and half of the oranges, matlab 187 minus 7x upon 2. How much is left? So how much is unsold? Sir, 5x minus 75 is unsold, 2x minus 26 is unsold and half is sold, so half is unsold. 187 minus 7x upon 2 is unsold. Question में क्या given है? Question में क्या given है? Question says that the ratio of number of unsold apples to number of unsold orange. Unsold apple, this and this are in the ratio 3:2. So we have to solve this equation. 5x upon 187 minus 7x upon 2. This is in the ratio 3:2. इस 2 को ऊपर ले जाते हैं. Now solve for x. What we will get? We will get 20x plus, minus 175, 150, 300 is equal to 187 cross 3. This is 561 minus 21x. So 41x is equal to 861. X is equal to 861 upon 41. 21 times. So x is 21. X is 21. You have to find the total number of unsold fruits. So unsold fruits, keep x as 21. 21 into 5 is 105 minus 75 is 30. 21 into 2, 42 minus 26 is 16. 21 into 7 is 147. 187 minus 147 is 40 upon 2 is 20. So final answer is addition of all of these three, 30, 20, 50, 66. This would be 66. Sorted? Very good. Next question. The sum of all real values of k for which this equation is satisfied. Okay. Okay. So guys, देखो करना क्या है, एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम है. दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सपोनेंट. ये भी दिस इज 1/32, 32 का क्यूब, 3, 2, 7, 6, 8
is 32 cube. So this can be written as 2 raised to the power 15. This can be written as 2 raised to the power 15. Let's convert everything to the base 1 by 2. So this is 1 by 2 raised to the power 3k multiplied by this is 2 raised to the power 15. So I can write 1 by 2 raised to the power 15 by 3 equals 1 by 2 cube multiplied by 1 by 2 raised to the power 15 by k. Sorted. ये क्लियर है? ये क्लियर है? Okay. Now base is same. Product में है. Powers would add up. Powers would add up. So we will have 3k plus 5. This is 15 by 3. So 3k plus 5 equals 3 plus 15 by k. Yes or no? लिख सकते हैं ना डायरेक्टली? वी कैन डू दिस. वेलकम अर्पित. डायरेक्टली लिख सकते हैं. चलो इसको सॉल्व करो. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बिकॉज दिस इज इन रेसिप्रोकल. दिस गोज इन 2 टाइम्स. सो 3k स्क्वायर प्लस 2k minus 15 equals 0. And guys, you have to find the sum of all real values of k. This is a quadratic equation. So k will have 2 values, right? K will have 2 values. This is a quadratic equation where k will have 2 values. उनका sum निकालना है. So simply क्या है? Sum of roots of this equation. Sum of all possible values of k is sum of roots of this equation. And what is the formula for sum of roots of a quadratic equation? Minus b by a. Sum of roots of a quadratic equation का formula क्या है? Minus b by a. So here answer would be minus 2 upon 3. Sum. Option B. Option B. Sorted. Very good. So this was 4th question. 4 question हो गए. Let's move to the next question. So this is the 5th question from 2024 QA slot 1. Renu would take 15 days working 4 hours per day. Very good. Whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day. Renu can complete a working 4 hours a day in 15 days. So Renu को total time कितना लगेगा बेटा? Renu is going to take 15 into 4, 60 hours to complete the work. Ayana. Renu is going to take 60 hours to complete the work. Similarly, Seema would take 8 days working 5 hours a day. तो सीमा को क्या टाइम लगेगा छोटू? Seema will take 8 into 5, 40 hours to complete the work. Now, what work we are talking about? What work we are talking about? Let's assume the work. Let's assume the work, and we know how to assume work. Let's say work is 120 units. LCM of 40 and 60. Let's say work is 120 units. So I can calculate efficiency of Renu and Seema. Renu can complete 120 units work in 60 hours. So what is efficiency of Renu? Efficiency of Renu is 120 by 60, 2 units per hour. Similarly, efficiency of Seema is 3 units per hour, 120 by 40. इसका मतलब क्या है कि अगर रेनू को 1 घंटा खुला छोड़ दिया जाए, सो रेनू विल कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ वर्क. सीमा को 1 घंटे के लिए फ्री छोड़ दो तो सीमा विल डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क. वेरी गुड. चलो, now they have made a special arrangement to complete the work. They decide to work to complete. They decide to work together to complete this task.
Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu. Seema, Renu. सीमा रेनू, ठीक है, आवर्स डेज, ओके. सीमा agrees to work for double the number of hours per day as रेनू. सो अगर रेनू x hours काम कर रही है पर डे, तो सीमा विल वर्क फॉर 2x hours पर डे. सीमा says I will work for 2 times the number of hours Renu is working. So if Renu is working for x hours a day, Seema will work 2x hours per day. Hours per day would be a better statement. While Renu agrees to work for double the number of days as Seema. अगर सीमा y days काम करती है तो Renu will work for 2y days. बोलो yes sir. Now, if Renu works for 2 hours per day, so x की वैल्यू गिवन है, x is 2. If Renu works for 2 hours a day, तो x की वैल्यू गिवन है, तो सीमा works for 4 hours a day. Yes or no? तो 4 and 2. 4 and 2. Then the number of days सीमा will work. ये निकालना है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है. You have to find the value of y. The number of days Seema will work. चलो बच्चा देखो. We know that total work they are doing is 120 units. है ना? Total work they are doing is 120 units. I know their efficiency as well. What is इनका efficiency? इनका efficiency भी लिख देते हैं. Efficiency क्या है? Sir, रेनू की efficiency है 2 units per hour. 2 units per hour. And सीमा की efficiency है 3 units per hour. राइट सर, रेनू की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स पर आवर, सीमा की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर आवर. सो टोटल वर्क डन बाय सीमा वुड बी सर पर आवर 3 यूनिट्स, टोटल 4 आवर्स, तो 12 इंटू वाई. टोटल वर्क डन बाय सीमा इज 12 वाई. एंड व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय रेनू? सर पर आवर 2 यूनिट्स, टोटल 2 आवर्स पर डे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज. सो दिस इज 8y. This is 8y, and the total work done is 120 units. So 12y plus 8y, which is 20y. 20y is equal to 120. So y is 6. Number of days Seema works is 6. Number of days Seema works is 6. Hi Anna. Very good, Ayush. 6 is the right answer. Let's jump to next question. चलो, a plus b root n is the positive square root of 29 minus 12 root 5. a plus b root n is the positive square root of 29 minus 12 root 5. So 29 minus 12 root 5. Let's try to find out the root of this particular number. इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं. And इसका रूट निकालने के लिए I'll have to take the help of a plus b whole square, a minus b whole square, which is not difficult. देखो, what we can do, I can write this as 29 minus 2 36 इंटू 5 लिख सकते हैं. आई मीन यहां से 6 लेके अंदर डाल दिया, सो दैट विल बिकम 36 इंटू 5. ओके, सो दिस बिकम्स 29 माइनस 2 रूट 180. ओके, नाउ दिस विल बिहेव एज माई AB. AB इज 180, तो a स्क्वायर b स्क्वायर. वेरी गुड. देखो, आई कैन रीराइट दिस एज रूट 20 plus 9 minus 2 root 180. This 20 can be written as root 20 whole square plus root 9 whole square minus
2 into root 20 into root 9. Check this out. Check this out. We can write like this. इस तरीके से लिख सकते हैं. So this is a square plus b square minus 2ab. This gives me a minus b whole square. So this can further be simplified as root 20 minus root 9 whole square or root 9 minus root 20 whole square. है या ना, ये भी a बन सकता है ना. This could be a, this could be b, vice versa, vice versa. So दोनों possibilities है. Even this is valid and this is valid. If this is valid, इसका root क्या होगा? इसका root होगा, I am interested in root. इसका root होगा root 20 minus root 9, है या ना? और इसका root होगा root 9 minus root 20. So root 9 is 3. This is 3. आप ध्यान से देखोगे. So this is negative ना, ये वाला negative है. This is negative. And we are only interested in positive square root. We are only interested in positive square root. So technically this will be eliminated. This will be eliminated. We will not consider this because here the root is negative. We have to consider this. The positive root we are looking for is this. तो इसको further लिखते हैं minus 3 plus root 20 and plus root 20 को I can write 2 root 5. Okay, 2 root 5 or plus root 20 भी works. Plus root 20 भी works. अब अगर इसको कंपेयर किया हमने a plus b root n से, इसको कंपेयर किया हमने a plus b root n से, a plus b root n से. So my a is minus 3, n is 20 and b is 1. आगे 1 है, like b could be 1. B could be 1. बोलो yes sir. So what is asked? A plus b plus n. A plus b plus n. So minus 3 plus 1 plus 20. So a plus b plus n is minus 1 plus 1 minus 3 plus 1 plus 20. This is 18. Option C is the right answer. Option C is the right answer. बोलो yes sir. Sorted. अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते. किस तरीके से लिख देते? अगर हमने इसको ऐसे लिखा होता कि minus 3 plus 2 root 5, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती सर? प्रॉब्लम ये हो जाता कि now this would have been a, this would have been n and this would have been b. So कहीं ना कहीं a plus b minus m का मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलता, राइट? ये मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिलता. Then the answer would have been 5 2 7 minus 3 4 और 4 भी दे रखा है उन्होंने. देखो, this is a trap. 4 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है. But you have to maximize this. तो मैक्सिमाइज करना है तो अगर b को थोड़ा सा कम करके a एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है तो इट्स बेटर टू गो दैट वे ना. अगर एक को थोड़ा सा कम करने पे b एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, सो इट्स बेटर टू गो दैट वे. So correct answer to this is 18. Next question. Next question. In September, the incomes of Kamal, Amal and Vimal are in the ratio 8:6:5. So Kamal, Amal and Vimal का income in September is in the ratio 8:6:5. Let's say 800x, ठीक है, 600x and 500x ले लिया.
they rent a house together and Kamal pays 15%. So rent क्या है? What is the rent? Rent में Kamal pays 15%. 15% of 800 is 120x. Amal pays 12%. 12% of 600x is 72x. And Vimal pays 18%. 18% of 500x is 90x. So what is the rent? That is 120 plus 90 is 210. 210 plus 72 is 282x. The rent is 282x. The rent of the house is 282x. Bolo yes sir. Now their income in October increased. The house rent is same while their income increased. So income in October, it increased by 10%, 12% and 15%. So income of Kamal in October is 880x. That of Amal is 12% से बढ़ गया. So 672x. And this Vimal का 15% से. So 575x. Okay. But rent is unchanged. Rent still is 282. Rent में कोई change नहीं है. In October, what percentage of their total income will be paid as house rent? So percent निकालना है. Percent is 282x. House rent is what percent of the total income? What is this income? 8, 6, 14, 19, 1980, 2050, 2050 में 70 ऐड करो, 2120, 2127, 2127x, multiply it by 100 will give you the answer. Welcome Rakesh. This will give you the answer. Use the calculator. I will use it. Let's use the calculator. How much is this? 28200 divided by 2127, 13.26 के आसपास है, right? So this is close to 13.26%. Option C. Option C. बोलो yes sir. चलो. Very good. 13.258 है ना सिया? 13.258 है. So that can be approximated to 13.26 from the answers. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, those who are not part of my official Telegram channel, join it. इसको scan कर लो. Be a part of it. You'll get links of free session, free resources for CAT and other management entrance test. आ जाओ. Next question. Let x, y, z be real numbers satisfying 4 times x square plus y square plus z square is equal to a, and 4 times x minus y minus z is equal to 3 plus a. Then a equals to what? A equals to what? अच्छा देखो, यहां पर सारे स्क्वायर्स में है और यहां पर सारे x में है. ओके, तो x स्क्वायर और x, y स्क्वायर और y, z स्क्वायर और z, x स्क्वायर और x अगर मेरे साथ एक इक्वेशन में आ जाए, इफ दे आर इन वन इक्वेशन, आई कैन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट? कांस्टेंट वी कैन ऑलवेज ऐड. कांस्टेंट वी कैन ऑलवेज ऐड. कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है. So I want them to be in same equation. I want them to be in same equation. अब same equation में लाने के लिए क्या करेंगे? We will subtract them. इन दोनों को subtract कर दो. Let this be equation 1 and let this be equation 2 and 1 minus 2 कर दो. 1 minus 2 कर दो simply. So what you will have? Left hand side में you will have 4x square plus 4y square plus 4z square minus किया, that would be minus 4x, okay, plus 4y. Check this out.
plus 4z, and here it would be a minus 3 minus a minus 3 would be left. This is what you will get if you do this properly. अगर आपने इसको properly किया तो this is what you will get. Okay, चलो. And now I'll start doing what I did sometimes back. I can clearly observe कि I have 4x square and 4x. So I'll write this as 2x whole square minus 2 into 2x into 1. तो एक 1 चाहिए होगा मुझे, 1 square, right? These two have been taken care of. These two have been taken care of. Similarly, 4y square and 4y. To them I can write 2y whole square. And then I have, देखो, I have plus 4y, right? So plus 2 into 2y into 1. So I need a 1 square. I need a 1 square. And going on the same logic, now this has been taken care of, y square and y वाला term. अब इसको करते हैं. It would be, again I am writing it below. So 2z whole square plus 2 into 2z into 1. So I will need 1 square. Okay, sorted. But left hand side में मेरे पास ये नहीं था, 1 square 1 square 1 square. This I have added. I have added 3 to the left hand side. तो कहीं ना कहीं 3 मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा. ओके, 3 मुझे राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 ऐड किया इधर और उस 3 को स्प्लिट कर दिया इन 3 टर्म्स. सो राइट हैंड साइड भी 3 ऐड करना पड़ेगा. यस और नो? सो व्हाट डू आई हैव नाउ? दिस इज 2x minus 1 whole square, 2x minus 1 whole square plus this is a square plus 2ab plus b square, 2y plus 1 whole square plus this is 2z plus 1 whole square equals 0. Now sum of three positive numbers equal to 0. ये कब possible है बेटा? देखो, this is a square, cannot be negative or cannot be negative. Similarly, this cannot be negative, this cannot be negative. All of them are non-negative numbers. This is possible only when all of them are individually 0. This is possible only when all of them are individually 0. मतलब this has to be 0, this has to be 0, and this has to be 0. This gives me 2x minus 1 equals 0. तो x is half. And going by the same logic, आपको y मिल जाएगा minus half and z मिल जाएगा minus half. So you have the values of x, y, z. You have the values of x, y, and z. What is asked? A equals to what? So you can use equation first to find value of A. X, Y, Z की value put कर दो. Use equation 1 to find the value of A. Using 1, this is my first equation. This was my second equation. Using 1, I can write 4 times x square 1 by 4, y square 1 by 4, negative उड़ जाएगा right, square करने पे 1 by 4 equals a. So this is 4 into 3 by 4 equals a. 4 से 4 cancel out, a is equal to 3. A is equal to 3. बोलो yes sir. बोलो yes sir. Do like the session guys. Take a moment to like the session. चलो next पे आते हैं. The sum of all 4 digit numbers that can be formed with distinct non-zero digits A, B, C, D. A, B, C, D are distinct and they are non-zero. A, B, C, D. They are distinct non-zero. They are distinct and they are non-zero. Okay. With each digit appearing exactly once. उन सारे नंबर्स का सम इज 1533110.
अच्छा, तो फर्स्ट थिंग्स, यूजिंग ABCD, how many words you can make, how many numbers you can make, four digit numbers ABCD को लेके, like ABCD is one possibility, okay, ABDC is second possibility. How many numbers you can make? Sir, in all 24 4-digit numbers can be made. 4 digits है ना, shuffle करो, in all unique possible ways they can be shuffled, आपको एक नंबर मिलेगा. So there are 24 ways, there are 24 numbers, right? अब इन सबका सम करेंगे, इन सबका सम करेंगे, राइट? तो इन सबका सम करेंगे तो टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे आप सबको ऐड करोगे तो 24 नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, 24 डिजिट्स को, यस और नो? अभी दिस वुड बी 24 डिजिट्स, एंड इन 24 डिजिट्स में 24 डिजिट्स का एडिशन क्या होगा? सर, इसमें 6 टाइम्स A आएगा और 6 टाइम्स B आएगा, 6 टाइम्स C आएगा और 6 टाइम्स D आएगा, राइट? सब इक्वल आएंगे ना? सब इक्वल आएंगे, बोलो हाँ जी. सर, 6 टाइम्स A, 6 टाइम्स B, 6 टाइम्स D, 6 टाइम्स D. Same happens here as well. Same happens here as well. Same happens here as well. हर एक जगह सब सेम आएगा. अर्पित 31 क्या है बेटा? राइट? अगर आप सारे टेंस वालों को ऐड करोगे तो आपको 6 टाइम्स these digits will feature. अच्छा, इनका एक्चुअल सम क्या होगा? एक्चुअल सम क्या होगा? सर, यहां पर जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो 6 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D आ रहा है, मल्टीप्लाई दिस बाई 1000, है या ना? बिकॉज यहां पर एक डिजिट का फेस वैल्यू इज 1000. इस प्लेस पे एक डिजिट का फेस वैल्यू इज 1000 एंड आई हैव दिस मच सम ऑफ द डिजिट्स, मल्टीप्लाइड बाई 1000. अच्छा, हंड्रेड्स प्लेस पे जो है, अगेन द सम इज 6 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D, बट द फेस वैल्यू ऑफ 100 is 100. Similarly, 6 times A plus B plus C plus D into 10 and 6 times A plus B plus C plus D into 1. इन सबका सम क्या हो गया बेटा? इन सबका सम is 6 times A plus B plus C plus D. इन चारों का सम which is 1 1 1 1 1 1 1 1 multiplied by 6 is 6 6 6 6. A plus B plus C plus D. This is the sum of all of these numbers. This is the sum of all of these numbers. Bolo yes sir. Got it? This is the sum. And this sum definitely would be an integer and is equal to 153310 plus n. This sum has to be an integer. And this is equal to, as given in question, this is equal to 153310 plus n, where n, जहां पर n क्या है? n is a single digit natural number. n is a single digit natural number. Okay? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको फिगर आउट करना है कि 6666 का विच मल्टीपल इज क्लोजेस्ट टू दिस. 666 के टेबल में 153310 के आसपास क्या आता है? सो टेक्निकली आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो इसको? व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप 153310 को 6666 से डिवाइड कर दो, को डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट सम आइडिया. लेट्स डू दैट. 153310 डिवाइडेड बाय 6666. दिस इज 22.998 के आसपास. ओके, मतलब इसमें हम कुछ ऐड करके वी कैन मेक इट 23. वी कैन मेक इट 23.
I can add something. Now, what needs to be added? What, sir, n is 6658. Okay. Now, what needs to be added? यहाँ पर क्या add करे so that this is exactly divisible. मतलब this is 23 times this. तो एक बार 6666 into 23 करके देखो. So 6666 into 23 is 153318. 6666 into 23 is 153318, which means if n is 8, अगर n को 8 पुट कर दिया, n को 8 पुट कर दिया, तो this is exactly divisible. अगर n को मैंने 8 पुट कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए, राइट? इसको अगर इधर से लेकर आ गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, I want this to be an integer, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर का सम है. So if I put n as 8, अगर n मैंने 8 पुट कर दिया, so this is 23, this is 23. Am I clear with this? चलो. So I'll put n as 8 and then a plus b plus c plus d will be 23. Then a plus b plus c plus d would be 23. I'll put n as 8 and then a plus b plus c plus d would be 23 and n is 8. n is 8. पूछा क्या था? The sum of a, b, c, d and n. इनका sum is 31. 23 plus 8 is 31. 31 is the right answer to this question. बोलो हाँ जी. Got it? Next question. आ जाओ. 10 raised to the power 100 when divided by 7. Remainder theorem. Remainder theorem. 10 raised to the power 100 when divided by 7. Okay. देखो, I know that 10 square divided by 7, the remainder is 2. 10 square is 100 divided by 7, the remainder is 2. So, ये मेरे लिए golden है. क्यों golden है? Because 2 cube when divided by 7, 2 cube when divided by 7, remainder is 1. तो ये मेरे लिए gold है, pure gold. So first, what I'll do, there are multiple ways to solve this. इसको solve करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. 10 square, how many times? How many times? 50 times. How many times? 50 times divided by 7. Divided by 7. And each of the time, individual remainders, हर एक केस में क्या होगा? 2. यहाँ भी 2, यहाँ भी 2. How many times? 50 times. Now 2 into 2 50 times is 2 raised to the power 50 divided by 7. 2 raised to the power 50 divided by 7. Very good. अब देखो 2 cube divided by 7 is 1. So 2 cube into 2 cube, how many times? 16 times. And then you have 2 square left divided by 7. Individually सबके साथ इसका रिमाइंडर क्या है? 1. But 2 square के साथ the remainder is 4. 2 square के साथ remainder is 4. So what would be the final answer? 1 16 times, and last में you have 4. So answer is 1 into 4. Correct answer is 4. Correct answer is 4. बोलो yes sir. Got it? Next question. ये भी हमने करा है क्लास में कुछ दिन पहले. There are 4 numbers such that average of first 2 numbers is 1 more than first number. आज इसको अलग तरीके से करेंगे. आज हम लोग वैल्यू पुट करके करेंगे. ठीक है.
Let this be the first number, second number, third number and fourth number. First number कुछ assume कर लो. First number कुछ assume कर लो. Let's say, अच्छा give me a number. एक 2 digit 1 digit का कोई नंबर दो. सिंपल देना. बड़ा नंबर लोगे आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा. Assume any number. अच्छा लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ना वही ले लेते हैं. Let's say first number is 4. Let's say first number is 4. लास्ट क्वेश्चन का आंसर 7 ले लो. चलो थॉर भी 7 बोल रहा है, 7 ले लो. चलो नाउ एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर. मतलब फर्स्ट टू नंबर्स का जो एवरेज है इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज 8, मतलब फर्स्ट टू नंबर्स का सम 16, एवरेज एज मतलब सम 16, इन दोनों का एवरेज 7 + 1 8, तो सम 16 होना चाहिए. ओके, सम 16 मतलब क्या? दिस हैज टू बी 9, दिस हैज टू बी 9. ओके, चलो आगे बढ़ जाओ. अब सेकंड नंबर मिल गया. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स. एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 8. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 8. ठीक है. सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन. अब इन तीनों का जो एवरेज है is 2 more than average of first 2 numbers, 8 + 2. so इनका एवरेज है 10, मतलब इनका सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 30, सम हो जाएगा 30, राइट. सो 9 7 16, 30 - 16 14 हो गया इधर. दिस इज 14 एंड देन हाँ वैल्यूज लेके ट्रायल एंड एरर बोल लो. एंड नाउ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स. अच्छा फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज क्या है? फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज है सर 14, 21, 13 का 10 है. तो फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज क्या बोल रहा है? फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज क्या बोल रहा? इज 3 मोर देन 39 इज द एवरेज फॉर फर्स्ट 4 नंबर्स. Sorry, 13 is the average of first 4 numbers. तो sum क्या हो गया? What is the sum of first 4? 39. 39 is the sum of first 4. 14, 21, 30. Okay. Not 52, na? Sum would be 52 because there are 4 terms. Sum would be 52. So 14. 21, 30, this would be 22. ये आपका आ जाएगा 22. हाँ 52, राइट. तो दिस वुड बी 22. हम लोग 20 सेकेंड के डिफरेंस पे है. व्हाट आई एम राइटिंग हियर यू कैन सी दैट आफ्टर 20 seconds. And now what is asked? The difference between the largest and the smallest number. What is the difference between largest and smallest? 15. What's the answer to this question? 15. What's the answer to this question? It's the difference between largest and smallest. Okay. 8. Easy one. In fact, slot, if you do it properly now, you can find most of the questions easy. Let's jump to the next question. An amount of 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at simple interest of 5% per annum. Okay, case 1. Case 1. Principal is 10,000. Rate is 5% per annum. So, एक साल में what would be the money earned? SI for 1 year is 5% of this 500. Time given नहीं है. Let's say it is n years. n years. तो total जो interest मिला, total SI would be 500n. हाँ या ना? Total SI would be 500n. Very good. So 5 into 6 is equal to 6 into 5.
वेरी गुड इसिया। अच्छा, केस 2 क्या है? व्हाट इज केस 2? नाउ दिस इंटायर मनी, केस 2 के लिए प्रिंसिपल क्या है? केस 1 का प्रिंसिपल प्लस SI एवरीथिंग, सो 10,000 प्लस 500 एन, है ना। अब यहां पे जो रेट है, रेट इज 6% फॉर 5 years, तो यहां पर SI जो है, SI इज 30%, टोटल इंटरेस्ट इज 30%, टोटल SI इज 30%, 6% फॉर 5 years, तो 30% क्या हो गया इसका? इसका 30% इज 3000 प्लस 150 एन, दिस इज द टोटल SI इन सेकेंड केस। एंड दिस रेशियो, if the interest received is in the ratio 10:13, so ये जो interest है, interest from first case and interest from second case, these are in the ratio 10:13. So what we can do, 500n upon 3000 plus 150n equals 10/13. Okay, अब इसको सॉल्व करना है, बस that's it. इसको properly you have to solve this. 50 से this gets cancelled out, so this would be 10n upon 60 plus 3n equals 10/13. 10 से 10 cancel out हो गया, so 13n is equal to 60 plus 3n. 10n is equal to 60, n is equal to 6, n is equal to 6. बोलो यस सर, सॉर्टेड। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स which is inscribed in a sphere is 846 centimeter square. So there is a sphere, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है गाइस, there is a sphere, उसके अंदर ये 2D, I have shown 2D, but you have to visualize, there is a sphere, rectangular box. So what do we get? What would be the diameter of the sphere? So diameter of a sphere would be square root of L square plus B square plus H square. The body diagonal of this box will behave as the diameter of the sphere. है ना, विजुलाइज करो, एक स्फेयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, सो बॉडी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बिहेव एज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यही निकालना है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज आस्क्ड. To find out the volume, we need the radius, and we can calculate radius if we know the diameter. Chalo, let's do this. Aa jao. What equations are given? Surface area of the rectangular box is 846. What is the surface area of a rectangular box? For a cuboid, rectangular box is cuboid in nature. What is the total surface area? Sir, 2 times LB plus BH plus LH. है ना, this is 846 LB. पाइथागोरस से नहीं हो सकता क्या? पाइथागोरस मतलब यहां पर पाइथागोरस किस पे लगाओगे बेटा? यहां पर पाइथागोरस किस पे लगाओगे ये बताओ. ये जो इक्वेशन आता है ना, ये तो पाइथागोरस से ही आता है, डेरिवेशन जो उसका है वो पाइथागोरस से ही आता है, बट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पाइथागोरस किधर लगाओगे? आपको पहले ये समझना है कि स्फेयर के अंदर अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स फिट किया है, या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी, सो द बॉडी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज द डायमीटर ऑफ दिस. एंड हाउ टू कैलकुलेट बॉडी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स? उसका फॉर्मूला ये है. हाउ टू कैलकुलेट बॉडी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसका फॉर्मूला ये है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मेंसुरेशन में. ओके, और ये आता है पाइथागोरस से ही.
पहले आप फेस पे पाइथागोरस लगाते हो, ठीक है, फिर वो ट्रायंगल बनता है, बॉडी डायगोनल वाला ट्रायंगल बनता है, सो डेरिवेशन उधर से ही है। चलो, दिस इज व्हाट वी हैव ऑल्सो द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस ऑफ द बॉक्स इज 144. हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 edges, 4 along length, 4 along breadth, 4 along height. So कहीं ना कहीं 4L plus 4B plus 4H ये गिवन है 144, ये गिवन है 144. So हम ये भी कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट कर दो, 423 एंड 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 36. So I have LB plus BH plus HS LHS 423. I have L plus B plus HS 36. अब how to relate, मुझे निकालना है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर. It's very easy. इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो. Let this be equation 1. Let this be equation 2. Squaring 2, 2 को स्क्वायर किया, squaring 2. What you will get? L plus B plus H whole square, which is L square plus B square plus H square plus 2 times LB 2 LH 2 BH equals 36 square is 1296 and 2 times LB BH LH is 846 first equation से. So this is 846. This is 846 first equation. So L square plus B square plus H square would be L square plus B square plus H square would be 1296 minus 846 450. यही है ना? 12 minus 8 4 96 minus 46 50 450. तो मिल गया आपको L square B square H square. What is the diameter then? So diameter is square root of 450. 225 into 2 15 root 2. Diameter is 15 root 2. So radius मिल गया आपको, radius is 15 by 2 root 2 and the answer is, what would be the volume? The answer is 4 by 3 pi r cube. So 15 root 2 by 2 whole cube. This would be the answer. Sorted. चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं. So this is 15 by 2 into 15 by 2 into 15 by 2 and 2 root 2. So 2 2s are 4, 2 से ये 2 गया, 3 से ये गया 5 times में. So 15 15s are 225 into 5 is 1125, 1125 pi root 2. 1125 pi root 2. This should be the answer. Option B. 1125 pi root 2. Sorted. बोलो yes sir. चलो आगे बढ़ते बेटा. क्वेश्चन नंबर 14. A shop wants to sell a certain quantity of grains. It sells half of the quantity and an additional 3 kg of these grains to first customer. It sells half of the remaining quantity and additional 3 kg to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg to the third customer, there is no grains left. Half first customer को he sold half and gave 3 kgs more. Now whatever he was left with, let this be the first customer. He sold half
of whatever we had initially whatever he had उसका half और 3 kg और दे दिया, half of whatever he had plus 3 kg more. Similarly उसके बाद कुछ बचा उसके पास, again second customer, this is the first customer, this is the second customer, he did the same thing here. जो बचा उसका हाफ बेच दिया, gave 3 kgs more, he was left with something, he did the same thing with the third customer, and finally after doing this he was left with nothing, he was left with 0. Okay, to solve these problems backtracking is the best route. अब देखो थर्ड वाले कस्टमर को सबसे लास्ट में क्या किया, 3 kgs दिया, 3 kg देने के पहले उसके पास 3 kg होगा, and this is half of what he had, so in here it would have been 6. Yes or no? 0 plus 3 into 2 plus 3, उसके बाद जो आया multiply it by 2, right? Again इसको 3 kg दिया तो take back that 3 kg plus 3 कर दो 9, and this is half देने के बाद हाफ बचता है, राइट? हाफ देने के बाद हाफ बचता है, दिस इज हाफ, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट what he started with. Again this was left after giving 3 kgs. Okay, तो add कर दो 3 kgs वापस, he was left with 21, and this is half of what he started with, multiplied by 2, 42. So he initially started with 42. बोलो yes sir. है ना? Backtrack करके you can solve it very fast. Option D. Very good, Anshu. Let's move to the next question. It can be done very fast. समझा नहीं समझा सिया? समझा बेटा? Again, those who are not part of my official Telegram channel, scan this QR code, or you'll get free resources and all of those things. Very good. Chalo, very good. Next question. Arithmetic comes from arithmetic. Suppose x1, x2, x3 till x100 are in arithmetic progression such that x5 is minus 4 and 2x6 plus 2 times x9 is x11 plus x13. x11 plus x13. Beta dekho. What could be done over here? Let's take this equation. Acha, any equation can be written as, this is x5. x5 is given to be minus 4. I can write this as a plus 4d. a plus 4d is minus 4. लिख सकते हैं ना? a being the first term, d being the common difference. a being the first term, d being the common difference. So a plus 4d is equal to minus 4. What about this? देखो, I can write this as x6 plus x9 equals x11 plus x13 by 2. Directly, we are not going to put directly put करके भी हो जाएगा, but better है कि you do it like this, क्योंकि these numbers are arranged in such a way कि आपका calculation easy हो जाए. So x11 plus x13 by 2, average of these two terms is the middlemost term. AP का average क्या होता है? The middlemost term. So average of these two terms is the middlemost term. So I can write x6 plus x9 equals x12. Yes or no? Yes sir. Very good. And now this is a plus 5d, a plus 8d, a plus 11d. The equation that we are getting is a plus
2d equals 0. This is the second equation. पहला इक्वेशन आपका इधर था, second equation is this. We can solve these two equations. To find value of a and d. I can solve these two equations to find the value of a and d. दोनों को subtract कर दो. Subtract 2 from 1. What will you get? You will get 2d is equal to -4. 2d is equal to -4 or d is equal to -2. And d -2 put कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहाँ put कर दो d -2. So you will get, put d is equal to -2 over here. You will get a is equal to 4. And what is asked? X 100 is asked. 100th term is asked. What they are asking is x 100. This is a plus 99d. So 4 plus 99 into -2. This is 4 minus 198 minus 194. Minus 194. Option B. हाँ जी, कोई तकलीफ? Done. Next, two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road. There are 2 points A and B. These are 45 kilometers apart, A and B, and the distance between them is 45 kilometers apart. Okay. Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A. Anil goes from A to B and Sunil goes from B to A. Okay, Anil goes from A to B and Sunil goes from B to A. Okay, starting at the same time. They start at the same time. They cross each other exactly in 1 hour 30 minutes. Suppose at some point of time they cross each other. Anil जा रहा है towards B and Sunil is going towards A. How much? Let's say this point is C. Let us say this point is C. How much time Anil took to travel from A to C? Sir, they crossed each other in 90 minutes. So Anil A से C आ गया in 90 minutes. And Sunil B से C पे आ गया in 90 minutes. Okay, उसके बाद they moved ahead. चलो Sunil, I am glad they are helping. If Anil reaches, अब देखो, after the point of meet, Anil is going towards B and Sunil is going towards A, and what they are saying is कि Anil reaches B, Anil B पे कब पहुंचेगा? 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A. Let's say Sunil को A आने के लिए X time लग गया. So Anil will take X plus 75 minutes. Okay, let's say Sunil को C से A आने के लिए X time लग गया. तो अनिल को कितना टाइम लगेगा? X plus 75 minutes. बोलो yes sir. And now the concept that you will apply over here कि for same distance, distance is directly proportional to time. हाँ या ना? If distance is same, time का ratio would be same. So AC के केस में, AC is the distance traveled by both of them. देखो guys, कंफ्यूज नहीं होना है. For AC, I can say time taken by A upon time taken by Sunil is 90 upon X.
अनिल को लगा 90 मिनट्स, सुनील को लगा x मिनट्स, टाइम का रेशियो इज सेम, टाइम का रेशियो इज 90 अपॉन x. फॉर BC again time taken by Anil is x plus 75, time taken by Sunil is 90. So time का रेशियो क्या है, TA by TB would be, and they are bound to be same. सर ये सेम क्यों है, टाइम का रेशियो सेम क्यों होगा? समझो ना कि मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ए को लग रहा है 3 घंटा, बी को लग रहा है 6 घंटा, तो 2 किलोमीटर कवर करने में क्या टाइम लगेगा? सर ए को लगेगा 6 घंटा, बी को लगेगा 12 घंटा. डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ए और बी का जो रेशियो है वो है 1/2. सो एक पर्टिकुलर दूसरे डिस्टेंस के लिए द रेशियो स्टिल इज 1/2. फॉर सेम डिस्टेंसेस दे आर ट्रेवलिंग, टाइम का रेशियो वुड बी सेम. फॉर सेम डिस्टेंसेस दे आर ट्रेवलिंग, टाइम का रेशियो वुड बी सेम. सो AC दोनों ने ट्रेवल किया है, वेयर टाइम का रेशियो इज 90 अपॉन x. BC दोनों ने ट्रेवल किया है, वेयर टाइम का रेशियो इज x plus 75 अपॉन 90. So this is equal to this, and you can solve that to find the value of x. You can proudly write 90 by x equals x plus 75 by 90. So x is square plus 75x minus 8100 is 0. Okay. Come on guys. Yes, same ratio. Very good. Now this is x square plus 135x minus 60x minus 8100 equals 0. X plus 135 minus 60x plus 135 equals 0. So x is either 60 or minus 135, but x cannot be negative. टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना. So x is 60. So time is, this is x is 60 minutes. Sorted. क्या पूछा था? What was asked? Speed of Anil in kilometer per hour. Speed of Anil in kilometer per hour. अच्छा, अनिल को कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में? This is 60 minutes. This is 60 minutes. So Anil took 90 plus 60, 150 plus 75, 225 minutes. Anil took 225 minutes. अनिल को टाइम लगा 225 minutes. Time is 225. This is 3 hour 45 minutes. मतलब 3/4 hours or 15/4 hours. है ना? Anil took 15/4 hours to cover a distance of 45 kilometers. In 15/4 hours, he covered a distance of 45 kilometers. What would be the speed? So speed would be distance by time, 45 by 15 into 4, 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour. बोलो हाँ जी, बोलो यस सर. Awesome. चलो, next question. For any natural number n, let an be the largest integer not exceeding root n. What is the value of a1, a2, a3 sum till a50? An is the largest integer not exceeding n. Okay. Acha, tell me what is the value of a1 then, a1. So a1 is root 1, 1
द लार्जेस्ट इंटीजर इज 1, a1 इज 1, a1 आपको क्या लेना है 1. व्हाट इज a2? a2 is root 2. Okay, a2 is root 2, root n. Root 2 is 1.414. 1.414. But आपको largest integer लेना है, largest integer. So this will be taken as 1. The largest integer here is 1. 1.414 का largest integer is 1. Okay, similarly a3 is root 3, 1.732. But यहाँ largest integer क्या है 1. So a1 से लेके a3 तक, a1 से लेके a3 तक, the value of each one is 1 multiplied by 3. 3 terms है ना, a1 a2 a3, a1 plus a2 plus a3, इन सब का वैल्यू 1 1 है, राइट. द वैल्यू विल चेंज एट a2 a4 सॉरी, a4 is root 4 which is 2. सर क्या ये मास्टर क्लास है? नो, दिस इज नॉट मास्टर क्लास अर्पित, ये यूट्यूब पे हम लोग लाइव कर रहे हैं. तो अब देखो a2 से लेके a8 तक, ऑल ऑफ देम विल हैव 2 एज द वैल्यू, राइट. a2 का वैल्यू सॉरी a2 नहीं बेटा, a4 से लेके ना, a4 से लेके a8 तक, ऑल ऑफ विल हैव 2, a4 2, a5 2, a6 2, a7 2 एंड a8 2. कितने टर्म्स है ये? a4 से a8 तक 5 टर्म्स है. कैसे निकालना है सर? a8 में से शुरू के 3 निकाल दो, a3 माइनस कर दो. आई मीन a4 से a8 तक काउंट करना है. हाँ वो हाँ मैराथन है, राइट. नहीं भारत, वी कैनॉट टेक टफ क्वेश्चंस बिकॉज दिस आर एक्चुअल कैट क्वेश्चंस. हम लोगों को वो नहीं करना है बेटा. आई मीन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. कैट से ऊपर नहीं जाना है. ओके, साइंटिस्ट, नीदर आई एम साइंटिस्ट नॉर आई वांट यू टू बिकम साइंटिस्ट अंडर मी. इफ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, हाँ, कंप्लीट पीवाईक्यू स्लॉट 1 अर्पित, कंप्लीट स्लॉट 1 पीवाईक्यू. सो आई डोंट वांट you guys to become scientist, to be scientist under me, because I myself am not scientist. So Bharat again is not a Bharat it's very clear. I mean it's very clear he is not a student. अरे you're not a student, save your time ना. क्या इधर टाइम पास कर रहे? क्यों टाइम पास कर रहे? At least stay, don't go. Increase my watch time. We need it. Okay? चलो आ जाओ. अभी देखो A9 से A9 to A15 तक, all of them will have 3 as the values. How many terms are there? 7 terms are there. Sorted. Similarly, A16 to A24 तक, all of them will have 4 as the values and number of terms here is 9. Okay, and I'm taking this out. A25 से A35 तक, all of them will have 5 as the values and there are 11 such terms. And then A36 से A48 तक, all of them will have 6 as the values. There are 13 such terms. And then A49 or A50, they will have 7 and 7. इनकी वैल्यू है 7 and 7. चलो आ जाओ. So this is 3 plus 10 plus 21 plus 36 plus 55 plus 78 plus 14. Okay, add them up. 10, 13, 13, 21 is 34, 34, 36 is 70, 70, 55 is 125, 125 plus 78 is 203, 203 plus 14 is 217. This is 217. This is 217. Okay. Chalo. Let's move ahead. Question number 18.
लेट्स ट्राई दिस वन। यूट्यूब से पढ़ के थोड़ी कोई 99% एरर थोड़ी बनता है भाई। चलो आ जाओ। अ ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क। अच्छा तुम ऑफलाइन से आए हो? नहीं ऑफलाइन से तुम नहीं आए रहोगे यार, तुम स्मार्ट बन रहे हो, मतलब यू आर नॉट फ्रॉम ऑफलाइन, यू नो। ओके, हालांकि ये आईडी मैंने देखी नहीं है, बट यू आर नॉट फ्रॉम ऑफलाइन, यू आर फ्रॉम हियर ओनली। अभी यू आर जस्ट ट्राइंग टू, फिर भी घूम रहे हो यूट्यूब के ऊपर, देखो तुम क्या कर सकते हैं अभी। अ ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, 2/3 of its content is poured out and replaced with water. So a glass initially had milk. A glass initially had milk. पता नहीं कितना मिल्क था, बट इसमें से मिल्क निकाला, 2/3 मिल्क निकाल दिया। लेट्स से Q क्वांटिटी था, लेट्स से Q क्वांटिटी ऑफ मिल्क था इनिशियली, एंड इसमें से 2/3 निकाल दिया एंड वाज रिप्लेस्ड विथ वाटर। So the quantity that was taken out was 2/3 times Q, and it was replaced with water. Same quantity was replaced with water, and this was repeated 3 more times. मतलब in all it was done 4 times. In all this was done 4 times. After 4 times, this is the standard question of removal and replacement dilution formula use होगा. So after 4 times I can write milk left is equal to milk initially 1 minus 2 by small q upon capital Q raised to the power 4. Okay, what is small q? The amount which is taken out every time, and this small q is 2/3 Q. This is small q is 2/3 capital Q. This is cancelled out. So what do I have? Milk left is milk initially 1 minus 1/3 raised to the power 4. Sorry, 1 minus 2/3 raised to the power 4. So 1/3 raised to the power 4. This is how much? 1/81. 1/81. Okay. So milk left upon milk initial was 1/81. और कहीं ना कहीं milk initial is the initial quantity also. कहीं ना कहीं milk जो initially जो milk है वो total quantity भी है. So total quantity 81 में 1 milk is left in a total of 81. 1 is left, मतलब 80 is water. Okay, out of 81 only milk is 1, so remaining 80 is water. है ना? So you had to find the ratio of milk to water. Now milk to water का ratio is 1/80. Milk to water का ratio is 1/80. बोलो हाँ जी। B is trap. B is milk upon total. B is milk upon total. Chalo guys, let's move. Question number 18 done. Question number 19. Let's try this question. चलो, ABCD is a rectangle. A, B, C, D is a rectangle with sides AB as 56 and BC as 45. ये भी मैंने कराया है कुछ दिन पहले क्लास में, आई बिलीव। मैं गिर गया इन ट्रैप। ओके, E is the midpoint of CD. E is the midpoint of CD, ठीक है? E is the midpoint of CD. तो AE
E is the midpoint of CD. So this would be 28, ये 45, ये 90 degree. We can calculate AE. AE क्या हो जाएगा? What would be AE? Sir, AE is square root of 45 square plus 28 square. So this is a square root of 2025 plus 784, 2809, and this is 53. This is 53. AE is 53. Very good. क्या पूछा है? Then the length in centimeter of the radius of incircle. Incircle. Now you have a incircle. एक incircle है. इस सर्कल का रेडियस निकालना है. So for a right angled triangle, radius of incircle is मतलब in radius for right angled triangle. For right angled triangle, एक right angled triangle का in radius क्या होता है? Sum of sides minus hypotenuse by 2. 45 plus 28 minus 53 by 2. This is 20 by 2. 10. For a right angle triangle, the in radius is sum of sides minus hypotenuse by 2. Very good. Perpendicular plus base minus hypotenuse by 2. Sorted? मेरा चैट वर्क नहीं कर रहा, नहीं आ रहा है बीच बीच में मैसेज. अर्पित, यस आया, बी आया, आ रहा है बेटा. दैट इज नॉट द केस. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. 3 more questions left. If the equation x square plus mx plus 9 equals 0, x square plus nx plus 17 equals 0, and x square plus m plus nx plus 35 equals to 0, have a common negative root. They have a common negative root. Okay, let's say the common negative root is alpha. Alpha. Let's say the common negative root is alpha. So this alpha must satisfy these equations. This alpha must satisfy these equations. So I can write alpha square plus mx, m alpha, x की जगह alpha put करेंगे, plus 9 equals this alpha square plus n alpha plus 17, which is equal to alpha square plus m plus n alpha plus 35 equals 0. है ना? बोलो yes sir. Right? You have 3 equations, 1 variable, 3 variables. Solve हो सकते हैं. This is the first equation, alpha square plus m alpha plus 9 equals 0. Second equation, alpha square plus n alpha plus 17 equals 0. Third equation, this is equal to 0. 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो सकते हैं. एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व देम इज कि आप पहले ना एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ फर्स्ट एंड 2 इक्वेट इट विद थर्ड. लेट्स इक्वेट दीज टू. सो अल्फा स्क्वायर प्लस m अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस m अल्फा प्लस n अल्फा plus 35, right? Alpha square से alpha square cancel out, m alpha से m alpha cancel out, n alpha is minus 26, okay, and n alpha is minus 26. चलो, okay, and now और अगर आप इस n अल्फा माइनस 26 को सेकेंड में पुट करते हैं, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 26 प्लस 17 इक्वल्स 0. बोलो यस सर. दिस n अल्फा एज माइनस 26 यहां पुट करोगे
So you will get alpha square minus 26 plus 17 is equal to 0. Gives me alpha square as 9. Alpha would be plus minus 3. Alpha plus minus 3. क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ सिंपल ही है ये, आपको अल्फा प्लस माइनस 3 मिल गया, बट अल्फा इज अ नेगेटिव रूट, अल्फा एक नेगेटिव रूट है, सो वी विल टेक अल्फा इज प्लस 3, वी विल इग्नोर द माइनस 3, हम लोग क्या लेंगे, विल टेक अल्फा इज प्लस 3, सॉरी अल्फा इज माइनस 3, अल्फा इज माइनस 3। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अल्फा माइनस 3 है तो n क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर n वुड बी माइनस 26 बाई माइनस 3, सो n वुड बी 26 बाई 3, बोलो यस सर, n वुड बी 26 बाई 3, राइट। अब देखो अल्फा माइनस 3 इसमें पुट कर दो, यू हैव दिस इक्वेशन, इसमें पुट करो, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9 इक्वल्स 0। ओके, यहां से आपको m मिल रहा है 9 9 18 बाई 3 6, m मिल गया 3, n मिल गया 26 बाई 3, अब प्लस 3 नहीं, बिकॉज दे हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट, सो द रूट that I can use in all the three equations has to be a negative root. Arpit, common root is negative. So the alpha का value is plus 3 and minus 3, but I cannot use plus 3. मुझे जो root चाहिए, जो तीनों में use कर सकते हैं, is minus 3. So I used minus 3 over here. I got m as 6. n में मिल चुका है. What is asked? 2m plus 3n. चलो 2m. So 2 into m is 6. 3 into n is 26 by 3. This is 12 plus 26, 38. 38. 38. Question says, yes. Question says that the common root is negative. So the root that you can use in all the three cases has to be negative. इसीलिए plus 3 को ignore कर दिया. We took minus 3. Sorted? चलो. Question number 21. The selling price of a product is fixed to ensure 40% profit. Let's say the cost price is 100x. Selling price is set to ensure 40% profit. Selling price would be 140x. Profit would be 40x. Very good. If the product had cost 40% less, ये मेरा case 1 है. Case 2. If the product had cost 40% less, 60x. If product, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोलता तो आप प्लस लेके भी सॉल्व करते, दो केसेस बनते, m और n के दो वैल्यूज आते, दो आंसर आते. ओके, चलो आ जाओ. Okay, so the cost price is 40% less, okay, and had been sold for 5 rupees less. 140x minus 5. Selling price is 5 rupees less. Then the resulting profit would have been 50%. Okay, then the profit would have been 50%. 50% of what? 50% of cost price. So what is the profit? What is the profit? Is 50% of cost price, 30x. Okay, and profit calculate करने का एक और तरीका है, selling price minus cost price, this minus this. So this is 80x minus 5. This is 80x minus 5. चलो, I can proudly say this is equal to this. I can proudly say 30x would be equal to
80x माइनस 5 एंड क्या मिला अपने को, डू इट। सो 50x equals 5, x is 1 by 10, x is 1 by 10. The original selling price, what was asked, the original selling price, the original selling price was 140x. The original selling price was 140x. 140 into 1 by 10 is 14. चलो, अच्छा लग रहा है ना भारत? Enjoying ना डियर? भारत से मुझे किसकी याद आ रही पता है? एक मूवी थी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में वो था ना कैरेक्टर, कौन सा था? गलती हुई कौन कौन था वो? सेकंड, जो सेकंड आता था वो डिस्ट्रैक्ट, उसको लगता था दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके फायदा है। हुआ क्या है एट द एंड ऑफ द डे? चलो गाइस, साइलेंसर साइलेंसर वो एग्जाम के एक दिन पहले डिस्ट्रैक्ट करता था लोगों को, राइट? सो भारत ने बस उसमें से डिस्ट्रैक्ट करने वाला वो लिया, बाकी और कुछ नहीं लिया। चलो आजा गाइस, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई नहीं करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट something 4 log x to the base 10 plus 4 log x to the base 100 plus 8 log x to the base 1000 is 13, then the greatest integer not exceeding x is what? आ जाओ, बेसिक्स ऑफ लॉग की जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर है क्वेश्चन। सो 4 log x to the base 10 plus 4 log x to the base 100 plus 8 log x to the base 1000 equals 13 है, राइट? बेस सेम कर सकते हैं हम, राइट? So this 100 can be written as 10 square and this square can be brought to in front divided by 2. Similarly, this 1000 can be written as 10 cube, okay, and this cube can be brought to, yes or no? कर सकते हैं, and now they can be rewritten as log x 10 raised to the power 4, पावर में चले जाता है, राइट? प्लस log x to the base 10 square, 4 by 2 is 2, पावर में चले गया, and this is log x to the base 10 8 by 3 13, okay? Now log a plus log b plus log c is what? Log abc. Log ABC, I can write log x to the base 10, powers would be added 4 to 6, 4 plus 2 plus 8 by 3 is equal to 13. So how much is this? 6, 18, 8, 26 by 3, right? This is equal to 13 and we can write this as 10 to the power 13 is equal to 26 by 3. I can write this as 10 to the power 13 is equal to 10 to the power 13 is equal to x raised to the power, or x raised to the power 26 by 3 is equal to 10 to the power 13. लिख सकते हैं बेटा? बोलो हाँ जी। मुझे x की वैल्यू चाहिए, I want this x to be independent, तो इधर 3 by 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट राइट हैंड साइड में भी 3 by 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x इंडिपेंडेंट चाहिए, आई वांट टू एलिमिनेट द पावर, तो 26 by 3 को 3 by 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड भी करना होगा।
So this gets cancelled. Left hand side में you have x, right hand side में you will have 10 to the power 10 into 13 into 3 by 26. This goes in 2 times. So x is 10 to the power 3 by 2. 10 to the power 3 by 2. So this can be rewritten as 10 cube to the power half. And this is nothing but the square of 10 cube. What is 10 cube? 10 cube is 1000. So x is square root of 1000. How much is the square root of 1000? ये 31 और 32 के बीच में आता है. So x is 31.5 बोल दो चलो. X is 31.5. So the greatest integer not exceeding 31.5 is 31. The greatest integer not exceeding 31.5 is 31. Sorted. And guys, we are done with all 22 questions of CAT 2024 slot 1. Were they difficult? Now do the analysis. That is more important. Is particular slot में, if you had solved 13-14 questions correctly, you were above 99 percentile. Above 99 percentile. अभी देखो, this was one question. ये easy category में आएगा. Easy category 21. Easy category. I mean, you need to be aware of the basics, right? आपको basics तो चाहिए. Easy category. Not at all difficult, right? ये थोड़ा conceptual था, was not difficult again. You need to be aware of concepts. Was it difficult? Very difficult. Was it bouncer? Log is very easy. It's not difficult. Easy. Again conceptual. थोड़ा सा calculation intensive. Sir, I attempted this slot using timer, solved 14 in 40 minutes. That is very good for this level, Saurabh. That is very good, beta. This was not difficult again. Looks difficult, but is not. This one easy. So इस particular पूरे slot में ना, again easy. हाँ, ये थोड़ा सा based on understanding was not the standard question. Based on understanding थोड़ा सा था ये. This was, I would say कि बहुत लोगों को क्लिक नहीं होता है, right? बहुत लोगों को ये क्लिक नहीं होता है. And I have seen others explaining in such a way. आप जाके देखो explanation. मैंने उसको सॉल्व किया था, इसको नहीं. ओके, आप देखोगे कि इसको ना दूसरे लोगों ने एक्सप्लेन भी बहुत अजीब सा करा है. सो दिस एट टाइम्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था. वंस यू नो द प्रॉपर सोल्यूशन इट इज इजी, बट फर्स्ट इंप्रेशन में क्या करना है. हाँ, दिस वॉज अलजेब्रा है भी, क्या करना है ये क्लियर नहीं होता है. ओके, एंड आई डोंट नो व्हाई I've seen couple of faculties explaining this particular question in a very long way. वो चले जाते हैं 3 terms के GP में. अरे GB, simply just subtract them, equate, you will get X, Y, Z and so much. Easy question. Again, ये conceptual है, not difficult. This is not difficult. Okay, easy. अगेन ये दूसरा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. यू नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस. आई मीन यू हैव टू बी डन विद दिस टॉपिक, तभी आपको ये समझेगा. देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट जो आपने नहीं भी करा है पहले, फिर भी आप कर सकते थे. दिस वाज नॉट वन ऑफ देम. दिस वाज अगेन, सो हार्डली 3-4 क्वेश्चंस जो थे जो शायद थोड़ा सा टाइम डिमांड करते हैं. ऑल अदर्स वर वेरी इजी इन नेचर. चलो नेक्स्ट PYQs. अभी देखो इजी बट नॉट इजी. अभी देखो नाउ सिंस अदर्स ऑल ऑफ अस हैव प्लान कि PYQs फटाफट करा देते हैं,
So what we will do in coming week at 7 p.m. in entire week I'll cover slot 2 and CAT 23 slot 1. अभी हम लोग PYQs करेंगे 7 PM को भी, एंड नेक्स्ट संडे अगेन जो स्लॉट होगा एक स्लॉट एक साथ, पूरा का पूरा स्लॉट एक साथ. सो अभी इन नेक्स्ट 3 weeks we will be done with entire PYQs till 2020. 7 PM के सेशन में we would be doing बैक ट्रैक करेंगे कल से, कल ये मंडे से, टुमारो कल से, कल कैट 2024 स्लॉट 2 डिस्कस करेंगे. सारा नहीं हो पाएगा एक सेशन में, आई हैव ओनली 1 hour देयर, तो 2 से 3 सेशन में वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड बैक ट्रैक करते जाएंगे. विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 days we would be done with the PYQs of all the slots till 2020. Okay, चलो guys, have a great day ahead. Signing off from this session. मिलते हैं again tomorrow. Keep shining. Goodbye भारत. Have a great day ahead बेटा. Hope you have learned something. कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा. जाते जाते do like the session guys. Have a great day ahead guys.